Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing good. This is going to be your chemistry 9th class, and today we will start the unit number 8, the first topic, that is chemical reactivity. The chapter name is chemical reactivity. Firstly, I'll introduce about the topic introduction, and further we will go on. The introduction, as you already know that there are lot of many things which you have observed in your daily life, like aeroplane है, train है, automobiles हैं, machines, different type of machines हैं, या फिर different type of tools use होते हैं, जो machine tools होते हैं, वो कौन से material से मिलके बने हुए होते हैं? They all are made up of metals, but different types of metals involved होती हैं, different type of like there are so many type classification of metals which are involved in different type of materials. Like aeroplane में जो metal use होती है that is aluminium. ठीक है, aluminium metal की characteristics are completely different from any other metal. Like ठीक है, ट्रेन के अंदर जो धात इस्तेमाल होती है, जो मेटल इस्तेमाल होती है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ, उसकी प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ हैं. Okay, on the basis of properties they are classified. We will further study about the classification of metals. So students, you have come to know that today we are going to study about different type of materials in this chapter. But in this topic we will talk about a special type of material. As the topic the chapter is about chemical reactivity, today we will start about metals. So now you have come to know about today's topic, that is metals. So as you all are the students of chemistry, so you must be pretty much sure about the periodic table. Let me draw the rough sketch about the periodic table. Okay. So there is a type of this. ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं जा रही, सो आप पीरियोडिक टेबल से किसी हद तक वाकिफ़ होंगे. दीज आर ऑल्सो मेटल्स. यहाँ पे भी मेटल्स हैं, दे ऑल आर मेटल्स, राइट. बट यहाँ पे कुछ लेडर लाइक जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, एक सीढ़ी की फॉर्म है, इन्हें हम क्या कहते हैं? Metalloids. They are metals, these are metalloids, and here are the non metals. Okay, so अगर हम आज के टॉपिक की बात करें, this is about metals. तो metals को सबसे पहले we will define that what are metals. मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो पॉजिटिव कैटाइन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के बाद. मीन्स दीज आर दोज एलिमेंट्स, लाइक सपोज अगर एक जनरल मैं आपको कॉन्सेप्ट दूं तो ये एक कोई भी सब्सटेंस है जिसको हम मेटल कहेंगे. तो जब इसको एनर्जी दी जाएगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाया जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, एंड वी टर्म इट एज कैटाइन. सो हम ये कह सकते हैं कि मेटल वो एलिमेंट्स हैं जो कैटाइंस बनाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के बाद. सो लेट मी डिफाइन इट. मेटल्स आर द एलिमेंट्स, लेट मी डिफाइन इट प्रॉपर्ली. मेटल्स आर द एलिमेंट्स which are electropositive.
Electropositive means they form positive charge species and form cation. And how they form cation? By losing electrons. Okay, so this was the definition of metals. So you can add examples. मेटल्स के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताऊँ इन डिटेल में एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल की बात करें तो वी हैव सोडियम मेटल. द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na. Sodium metal, magnesium metal, its symbol is capital M and the small g. Copper metal and so on. You can add more than 2 examples as per your choice, but there must be 3 or 4 examples, right? Now we will discuss about the classification of metals. How metals are classified? Classification of metals. So this is going to be the heading of your topic, the subheading. The first heading was about metals. Metals are classified on the basis of their reactivity, right? So the first classification is very reactive metal, like they react vigorously. Reactive metal, I'll add 1. So very reactive metals are those metals which reacts vigorously, and here are a few examples that they are potassium. They include potassium, sodium, calcium, and then magnesium, and aluminium. You can make your question more effective and attractive by adding their symbols, like potassium. Potassium has the symbol K. Its atomic number is 19. You can write it as like this. And sodium, Na, its symbol is Na, and its atomic number is 11. And then calcium, Ca, its atomic number is 20. Then magnesium, M, capital M, and the small g with the atomic number 12. Aluminium, A, small l, aluminium, and its atomic number is 13. This is how you can make your question more effective and attractive, right? The next classification we have, that is moderately reactive metals. Moderately reactive metals. Here the word moderately suggests that ये रिएक्ट तो करते हैं बट मीडियम जो होती है इनकी रिएक्टिविटी होती है, ना ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करते हैं और ना ही ज़्यादा स्लो होते हैं in the chemical reaction, right? So the examples included here are
The number of metals which are included here are zinc, right? And iron, obviously iron is also, okay, iron, I-R-O-N, iron. Zinc, Zn, iron, Fe, then tin, Sn, lead, Pb. These are the symbols of these metals which are moderately reactive. And the third category we have, they are called least reactive metals. Right? Least reactive metals. Here the word least suggest means they react very slowly, or they are not good with the chemical reaction, or with their reactivity, right? So the examples which are included for least reactive metals or the noble metals, they are also called noble metals, because noble word also suggests they are not good with the chemical reactions. They used to isolate their cells, right? So in the least reactive metals, it includes copper, mercury, CO double PER, copper. Its symbol is Cu. Mercury, its symbol is Hg, capital H and small g. Silver and gold. Here I write it as, like, you have to write in the form of steps, right? Silver, symbol is Ag, and then gold, that symbol is Au. Okay, so let me revise this, that we have in the first, we have studied about the definition of metals, that was the substance, the elements which are good with the losing electrons, and they form a cation, and they are electropositive. Like, अब ये इलेक्ट्रॉन्स को, अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और एक क्या बना देते हैं, कैटाइन बना देते हैं. तो ये क्या है, दे आर मेटल्स, एंड you all know that metals are good conductor of heat and electricity due to these free और mobile electrons. इनको free या फिर mobile electrons भी कहते हैं, ठीक है. इन ही की वजह से metals को good conductor of heat and electricity कहा जाता है. So we have studied about the few examples of metals. Then we have discussed about the classification of metals, very reactive metals, moderately reactive metals, and the least reactive metals, along with their examples, right? So I'm going to tell you now that how they are good conductor of heat or electricity, or why is it so to lose the electrons. This is just for the sake of your concept. So I'll write the heading as a concept. So let's suppose take an example of sodium, that is sodium Na. Okay, its atomic number is 11, as you all know, right? So let me write the electronic configuration: 1s2, 2s2, 2p6, and 3s1. 6, 2, 2, 10, and then 1, 11. Okay, let me draw the atomic structure here. 2 electrons, and then 6 electrons, no, 8. 8 electrons, and after that, in the 3s orbitals, it contain 1 electron. So यहाँ पे होने कितने चाहिए थे, 3s1 एंड 3p6 होना चाहिए था, बट यहाँ पे खाली है. तो यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, बट हैं कितने, 1 इलेक्ट्रॉन. 7 इलेक्ट्रॉन्स की इसको ज़रूरत है, और ये ले अगर, और तब स्टेबल हो सकता है.
या फिर एक इलेक्ट्रॉन को, ये जो अपने आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको लूज़ कर दे, ठीक है, बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, लूज एंड आई राइट इट एज गेन। तो यहाँ पे इसको क्या, ऐसा कौन सा ऐसी कंडीशन होगी जो ये इस्तेमाल करे, जो जिसको ये फॉलो करे सोडियम एटम, तो इट वुड बी स्टेबलाइज इटसेल्फ, ये स्टेबल हो सकता है। सो लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन इज़ मोर convenient as compared to gaining 7 electrons, because nobody is going to lose 7 electrons just for the sake of sodium atom, right? No other element is going to do this for sodium. So एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देना इज मच मोर कन्वीनियंट फॉर सोडियम एज कंपेयर टू गेनिंग 7 electrons. सो सोडियम विल लूज इट्स आउटर मोस्ट 1 electron and form cation. This is how metals show their reactivity, or they are good in their chemical reaction or their reactivity, and they are good with the conductors due to these conductance due to these free or mobile electrons. Well, students, the next subtopic we have, that is the physical characteristics of metals. There are few important physical characteristics of metals which are included in your syllabus. So the first characteristic we have, all metals are solid. So you can write as a heading here, solid, and then you can explain it that all metals are solid, but except mercury. We have a metal, that is mercury. Its symbol is Hg. It is in liquid form. Mercury is in liquid form, but all the other metals are solid. The next physical characteristic we have about the melting and boiling points. Melting and boiling point. All metals have high melting and boiling points. High melting and boiling points. एक्सेप्ट द ग्रुप अल्कली मेटल्स, जो तमाम दूसरी मेटल्स हैं ना, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। इनकी जो बॉन्डिंग होती है, जो आयनिक बॉन्ड ये बनाते हैं, या फिर आपस में जो इनकी मेटालिक बॉन्डिंग होती है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं कि इतनी ईजीली मेल्ट या बॉयल नहीं होते, इनको ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होता है। बट एक्सेप्ट it's X, right? Except alkali metals. Okay, alkali metals. अल्कली मेटल्स जो है ना, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतने हाई नहीं होते। अल्कली मेटल्स में कौन कौन इंक्लूडेड है? लाइक लिथियम, द 1A group. 1A group are known as alkali metal. Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. This is a group of alkali metals, and they are 1A group. These are the members of 1A group, right? The next physical property or physical characteristic, that is third number, we have, they possess a metallic luster. Metallic luster means here the shiny appearance.
metals have metallic luster. They have shiny appearance and they can be polished. ये पॉलिश हो सकते हैं, मेटल्स को पॉलिश किया जा सकता है ना, राइट. द फोर्थ वन वी हैव, लाइक घरों में जैसे मेटल्स की जो फर्नीचर होता है या फिर विंडोज़ होती हैं उनको पॉलिश किया, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि पॉलिश हो सकते हैं. सो मेटल्स कैन बी पॉलिश. The next characteristic we have, they are malleable. M-A-L-L-E-A-B-L-E. Malleable and ductile. Okay. What is malleable and what is ductility? What is malleability and ductility? Metals have the characteristic that they can be drawn into sheets and wires. आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उनमें मेटल की वायर्स मौजूद होती हैं, जस्ट फॉर द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डिफरेंट अप्लाइंसेस के साथ इस्तेमाल होती हैं. और मेटल्स की शीट होती हैं. सो मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं, वो सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स हैं जिनको हम शीट्स में और वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं. सो यू कैन राइट दैट मेटल्स कैन बी हैमर्ड, मतलब उनको ऊपर फोर्स लगा के उनके हैमरिंग करके उनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू हैमर्ड इनटू शीट्स. एंड द सेकंड पॉइंट वुड बी दे कैन बी ड्रॉन into wires, right? The next fifth point we have that they are conductors. कंडक्टर, आप इसको कंडक्टर की हेडिंग देंगे. यू कैन राइट दैट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity. The sixth physical characteristic we have about the densities. Metals चूँकि बहुत भारी होते हैं, इस वजह से डेंसिटी को अगर डिफाइन करें, डेंसिटी क्या है? mass by volume. They are heavier than other non-metals or metalloids. So we can write that metals have high density. Metals की density ज़्यादा होती है. The seventh characteristic we have that they are hard. इनके टेक्सचर की बात करें तो ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं. Like, let me write, they are hard. फॉर एग्ज़ाम्पल तमाम दूसरी मेटल्स ले लें तो उनमें से कोई भी एग्ज़ाम्पल आप ऐड कर सकते हैं. कॉपर ले लें, like aluminium are a little bit softer than the other metals, but the most softer one, like except, ऐसे करके मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, that except the metals like except sodium and potassium.
सोडियम एंड पोटाशियम मेटल्स, ऑल द अदर मेटल्स आर हार्ड। उनमें से कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जिंक ऐड कर सकते हो, कोई कोई और एग्जांपल ऐड कर सकते हो, कॉपर कर लें, कुछ भी कर लें, गोल्ड कर लें, ठीक है। बट सोडियम और पोटाशियम क्या होते हैं? सोडियम एंड पोटाशियम आर सॉफ्ट मेटल्स एज कम्पेयर टू जिंक, एज कम्पेयर टू अदर all the other metals, like, right? So this was all about the characteristics of metals, physical characteristics. Now come to the chemical characteristics of metal. Chemical properties or characteristic properties. केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले जो इनकी करेक्टरिस्टिक है, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी रखते हैं। सो इसी वजह से इन्हें मेटल्स कहा जाता है, क्योंकि ये जल्दी से केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं, इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, राइट। नाउ द सेकंड पॉइंट वी हैव, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बहुत इजीली और रेडिली कर लेते हैं, मीन्स दे आर गुड विद हैविंग रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रेडिली रिएक्ट with oxygen, and by reaction with oxygen they readily react with oxygen, and by having reaction with oxygen they form basic oxides. For example, and form basic oxide. For example, अगर सोडियम की बात करें प्लस O2, सोडियम के ऊपर क्या वैलेंसी होती है? +1, इसके ऊपर -2, Na2O, they form basic oxides, right? For balancing this reaction you have to write like 2 here and then 4 here. They form ionic compounds. Whenever they react with metals, they form ionic compounds with non-metals. फॉर एग्ज़ाम्पल नॉन मेटल की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर सोडियम मेटल की मैं एग्जांपल लूँ, Na पॉजिटिव प्लस Cl -1, they form NaCl, sodium chloride, and sodium chloride is an ionic compound, right? The fourth chemical characteristic we have, they have metallic bonding. लाइक मेटल्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है दैट इज़ मेटालिक,